हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टॉक मार्केट। सो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टॉक टिप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग आवश्यक है, तो सहयोग दीजिएगा। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, आज हम बात करते हैं स्टॉक टिप्स के बारे में। फर्स्ट स्टॉक है हमारा एमपी हैसिस लिमिटेड, महाराष्ट्र से। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। ओके, लेट्स मूव। ओके, सो गाइस, एमपी हैसिस शेयर प्राइस, स्टॉक एनालिसिस एंड रेकॉर्ड्स। करंट मार्केट प्राइस 2073.25 विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹3500। 3500 का टारगेट है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। करंट मार्केट प्राइस 2073.25। लाइव मार्केट प्राइस एमपी हैसिस शेयर प्राइस 2073 विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹3500। 3500 का टारगेट है। शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। दिस इज अ टेक्निकल चार्ट। एमपी हैसिस लिमिटेड, सेक्टर आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आईटी कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर। ओके, टेक्निकल चार्ट। Live market price 2072.55. Insights, key metrics, returns. Okay, intraday fact check. In the last 18 years, only 3.57% trading season saw intraday gains higher than 5%. Key metrics. Live market price 2074.10. Okay, key metrics: PE ratio 24.13, EPS TTM 86.27, market capital 39,193.83 crore, sectoral market capital rank 9, PB ratio 5.65, dividend yield 2.21, face value 10, beta 0.08, VWAP 2087.10 and 52-week low high 3465.80 and 1896.05. Okay, MPIC's share price returns: 1 day, 1 week, 1 month, 3 month, 1 year, 3 years and 5 years. Okay, news. MPIC's news and analysis. MPIC's share analyze. Recommendation: strong buy. Okay, financials. Ratios, cash flow, balance sheets and income, profit and loss. Quarterly, annual, December 2022. Betting 3-year revenue CAGR. Company's annual revenue growth of 23.0% outperforms its 3-year CAGR of 15.14%. Source: consolidated financials. Okay. Total income 3,546.19. Okay. Total income growth minus 0.48. Total expenses 2,970.79. Total expenses growth minus 0.38. EBITDA 575.40. EBITDA growth minus 0.97. Profit after tax PAT 412.27. PAT growth minus 1.48. EBITDA margin 16.23. Net profit margin 11.63. Basic EPS 21.90. Okay. Forecast. Technicals. Price and analysis.
45% positive movement since 1st Jan 2005 on intraday basis. 54% negative movement since 1st Jan 2005 on intraday basis. Pivot levels, classic R1, R2, R3, S1, S2, S3. Pivot 2093.55. ATR 5 days, 14 days and 28 days. Peer comparison. Technical chart. Mphasis, Tata Elxsi, Persistent Systems, L&T Tech. Ratios performs. Okay. Stock returns versus Nifty 100. Stock gave a 3-year return of 127.65% as compared to Nifty 100, which gave a return of 44.63% as of last trading season. Okay. Shareholding pattern. Total shareholdings. Okay, quarter on quarter change. Live market price 2071.95. Target price 3500. Okay, category 31st December 2022. Promoters 55.65. Pledge 0.00. FII 18.89. DII 19.32. Mutual funds 12.55. Others 6.14. Okay, mutual fund ownership. First, मेरे asset large cap direct growth, equity large cap rating 4 star, amount invested 213.99 crore, 0.63% annual plus 8.95% change month to month basis. Okay, then second, मेरे asset focus fund direct growth equity flexi cap rating 4 star, amount invested 197.58 crore, 2.24% annual plus 21.92% change month to month basis. Okay, then third, Canara Robeco emerging equities equity large cap large and mid cap rating 4 star, amount invested 193.55 crore, 1.25% annual plus 5.37% change month to month basis. F&O code, corporate action, Mphasis dividend, others. About Mphasis Limited. Okay, Mphasis Limited incorporated in the year 1992 is a mid-cap company having a market capital of rupees 39,865.20 crore, operating in IT सॉफ्टवेयर सेक्टर. एक IT कंपनी है ये. Mphasis Limited की प्रोडक्ट रेवेन्यू सेगमेंट इंक्लूड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2022. Okay, financials for the quarter ended 31st December 2022. The company has reported a consolidated total income of rupees 3,546.19 crore, down 48% from last quarter. Total income of rupees 3,563.23 crore and up 12.42% from last year same quarter. Total income of rupees 3,154.36 crore. Company has reported net profit after tax of rupees 412.27 crore in latest quarter. Okay. Company has BSR and Company LLP as its auditors. As on 31st December 2022, the company has a total of 18.83 crore shares outstanding. Okay. Okay. Davinder Singh Brar, Chairman. Nitin Rakesh, Managing Director and CEO. Industry, IT Consulting and Software Midcap. Location, Bagmani World Technology Center,
Marathali, outer ring road, and Dodakundi village, Bangalore, Karnataka. Maratha and outer ring road, Dodakundi, Dodakundi village, Bangalore, Karnataka 560048, India. Okay. Okay, so guys, Mphasis share price, stock analysis and Recos. Current market price 2071.95 with a target price of rupees 3500. Sector IT software, इंडस्ट्री आईटी कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर. कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है. ओके सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए. नमस्कार. बोलो राधे राधे.